सो गाइस, प्री इंडिपेंडेंस इंडिया, यहाँ पे हमारे पास ब्रिटिश रूल था और ब्रिटिशर्स यहाँ पे 200 साल रह के गए, 200 साल रूल करके गए। उन 200 सालों के अंदर बहुत कुछ वो यहाँ पे छोड़ भी गए जो कि उनकी धरोहर है, लाइक द स्पोर्ट क्रिकेट, विच इज़ द मोस्ट लव्ड स्पोर्ट इन इंडिया टुडे। एक दूसरी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ वो यहाँ छोड़ के गए, उनका ब्रिटिश आर्किटेक्चर विच इज़ ब्यूटिफुल। आज हम यहाँ पे आए हैं दक्षई में, जो सोलन डिस्ट्रिक्ट में आता है, एंड वी हैव दिस ब्यूटिफुल कॉटेज हियर विच यूज्ड टू बी अ ब्रिटिशर्स आर्मी मेस। बट अगर आपने एक और चीज़ नोटिस करी हो, द क्लासिक 350, द ब्रिटिश बाइक दैट वी are in love with since the past 70 years. Of course it is made in India today, but of course उनकी ये एक ऐसी धरोहर है जो आज सारे इंडियंस लव करते हैं और उनको प्यार करते हैं। So guys, we are here today to review this bike, the Classic 350. डोंट मैस इट अप, डोंट मैस इट अप, ये वर्ड्स बोले थे रॉयल एनफील्ड की मैनेजमेंट ने उनकी डेवलपमेंट टीम को इस बाइक के लिए, द रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350। आपको पता है वर्ड्स उन्होंने क्यों बोले थे? वाई दिस बाइक इज सो इंपॉर्टेंट फॉर रॉयल एनफील्ड? बिकॉज दिस हैज़ बीन द ब्रेड एंड बटर ऑफ रॉयल एनफील्ड। 2005-2007 के आसपास जब कास्ट आयरन एनफील्ड आया करती थी, तब रॉयल एनफील्ड डिडंट हैड अ फ्यूचर एज सच, क्योंकि वो पिछले 60 साल से सेम बाइक बना रहे थे एंड जो प्योरिस्ट थे दे लव द बाइक, बट जो एक वाइडर ऑडियंस थी वो उस बाइक को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उसी का जवाब देते हुए 2009 के अंदर रॉयल एनफील्ड इंट्रोड्यूस्ड द क्लासिक 500। दैट बाइक वाज द वन जहां पे उन्होंने पूरी नॉट ओनली इंडियन मार्केट को बट ऑल्सो इंटरनेशनल मार्केट को क्रैक किया था। रीजन बीइंग, it had the old world charm, it had the dug sound which we love so much, but it also had the convenience that जो हमको मॉडर्न एक वर्ल्ड में चाहिए, like electric start, like EFI। but ये सारी convenience के साथ साथ it had a beautiful design, it came in amazing colors, और it was also more reliable compared to the cast iron engine। so इतने सारे सक्सेस के बाद द बाइक वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2018-19 एंड दिस थिंग वॉज इंट्रोड्यूस्ड। दैट्स वाई रॉयल एनफील्ड वॉज सो क्रिटिकल अबाउट दिस बाइक। अब अगर आप इस बाइक को देखेंगे, इट इज कंप्लीटली ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म विच इज द जे प्लेटफॉर्म। फ्रॉम द इंजन टू द शैसी, इट्स अ ब्रांड न्यू। सो गाइस, इससे अच्छा कि हम आपको अपने व्यूज या एक्सपीरियंस दें रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में, वी हैव मिस्टर अभिनव हियर, who's the owner of that beautiful bronze classic 350. So Mr. Abhinav, why the classic 350? All right. First of all, I would like to thank you guys for inviting me on your channel. Now, answering to your question, why bronze 350, right? तो ये एक long ago dream था जो अब जाके fulfill हुआ मेरा. It was like technically this is my first bike, but I had owned one R15 in 2013. उसकी भी एक story है। My dad, I wanted a bike, okay? I asked my dad कि मुझे एक bike चाहिए। I was a college going student then. तो क्या हुआ, उनको बोला कि bullet चाहिए, so he booked a 350 standard bullet for me. So booking हो गई, बट उसी टाइम पर आफ्टर द बुकिंग R15 V3 वर्जन लॉन्च्ड। Yes. एंड somebody close to me, that person asked me, अभिनव बुलेट क्या करेगा लेके? गो फॉर स्पोर्ट्स बाइक बिकॉज ऑफ योर एस्थेटिक लुक्स एंड ऑल, राइट? तो मैंने पापा को बोला कि मुझे R15 चाहिए। सो ही वाज लाइक कि चल ठीक है ये ले ले। तो कॉलेज में था तब, तो उस बाइक के बाद लाइक आफ्टर 2 months आई स्टार्टेड feeling regretting
कि भाई अभी ये बाइक ले तो ली है, कोई बैठ नहीं सकता पीछे, कोई इसका फायदा नहीं है बाइक का. एंड देन इट वाज लाइक कि अब तो वो बेच नहीं सकता, अब वो 3-4 years तक रखनी पड़ी बाइक. और उसके बाद आई हैड टू सेल इट ऑफ बिकॉज वो बिल्कुल यूजलेस थी. वो 3 साल में सिर्फ 4000 किलोमीटर चली थी. एंड देन आई वाज ड्राइविंग कार सिंस देन. तो बुलेट लेनी थी, बट ड्यू टू ऑल द सर्कमस्टांसेस, आई वाज इन कॉलेज, आई हैड अ लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, आई डिड नॉट हैव टाइम टू राइड बाइक एंड ऑल दैट. तो उसके बाद अब जाकर फाइनली आई वाज डूइंग लाइक माय ओन थिंग, and I saw this Reborn 350, and I was like, I just fell in love with that bike, and I straight away went to the showroom. Basically, I went. There were two bikes I had seen, which was one was Meteor, and other one was this. And I prefer I wanted to see Meteor more than this when I saw it on photographs. So जब मैंने उसको in person देखा, I did not like Meteor that much according to me. So when I saw this Reborn 350, it was bulkier. It was it was obviously it was the one I had seen. It was chrome, and I just fell in love with that, and I immediately decided to buy that bike. And on the spot, I just asked about all the quotation and all. I paid the money, and very next day I took the delivery. So it was a love at first sight, huh? Exactly. It was purely love at first sight. So आपके दिल में हमेशा रॉयल एनफील्ड थी, बट ये हुआ कि आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपको वो चीज रियलाइज आपने करी. Because I was living in different city, I did not have time to ride a bike there. Okay, so when I came back in my hometown, so I was doing my own work, and then I was like, let's have a bike, and which should look good. Right, not like regular bikes, and you know that how many regular bikes are there in the market. And but if you see high segment bikes with the price, okay, and the budget you have, okay, for the budget I had, this bike was perfect for me. This really stands out, ना? Definitely. आप जब भी इसको बाहर लेके जाते हैं या रोड पे लेके जाते हैं, स्पेशली आई लाइक टू अप्रिशिएट द चॉइस ऑफ कलर. मेरे हिसाब से सबसे खूबसूरत कलर है क्लासिक ब्रॉन्ज जो इन्होंने लिया है. तो ये बाइक स्टैंड आउट करती है क्राउड में से. और इसकी कलर्स की भी स्टोरी है. जब मैं ये बाइक लेने गया था, मैंने ऑलरेडी इसकी फोटोज देखी थी, रेड एंड ब्राउन कलर में थी. राइट. तो जो तो जब मैं शोरूम में गया तो रेड कलर नहीं था. सो आई आस्क्ड द सेल्समैन कि इसका रेड कलर देखना है. तो सेल्समैन स्ट्रेट अवे टोल्ड मी कि सर, डोंट गो फॉर रेड. ही गेव मी द लॉजिकल रीजन कि which I also believe the same thing. जो इसका red color है, at certain point of time you'll get bored of it. Yeah. Right. And it was too bright. Okay. Yeah. So the brown was obviously the vintage thing it had, right? Yeah. And it definitely can go for future for further years, and it still won't look old. Yes. It will complete with the vintage look, right? Yes. तो ब्राउन्स का बहुत सारे एक्यूमुलेट करके पॉइंट्स की फ्यूचर में अगर देखूंगा मैं, तो इसको एक विंटेज बाइक की तरह जानी जाएगी. ये no doubt about it. क्रोम, राइट. Yes. और ऑब्वियसली क्लासिक है, एंड इसमें अगर मैं कुछ विंटेज मॉड्स भी करता हूँ, इट विल लुक ब्यूटीफुल. No doubt. एंड इफ आई इमेजिन रेड कलर, आई डोंट थिंक दैट आई शुड हैव गॉन फॉर रेड. हाँ, सबकी अपनी प्रेफरेंस हो सकती है, किसी को रेड भी पसंद आ सकता है, बट व्हेन आई एक्यूमुलेटेड ऑल द पॉइंट्स, ब्राउन इज द वन. एंड ऑल्दो रेड क्रोम वाज द लॉन्च कलर फॉर द बाइक, इसी कलर में बाइक जो होती लॉन्च हुई थी, बट दिस कलर आई फील इज टाइमलेस, इजंट इट? एग्जैक्टली. इवन मैंने अभी मैं बाइक चला रहा हूँ, आई हैव ड्रिवन इट फॉर 5000 किलोमीटर एज ऑफ नाउ. तो अभी तक मैं मार्केट में नहीं देखता जी सेम कलर. राइट. रेड देखा है 2, और एक ही मुझे ब्राउन्स दिखा था ऑन माय सोलो ट्रिप व्हिच वाज टू केदारनाथ. यस, coming on to that. Yeah. So you have recently had a trip to Kedarnath. Yes. 1000 kilometers की trip थी. Right. Going and back. Yeah. And how was your experience on that trip? It was beautiful. I should tell you this thing, that I had a tail bag
on this bike. Okay. It was mounted on pillion seat. Okay. So I was riding it on like 100, 110, and the bike was super stable. There were curves in the mountains, there were dead ends, and this bike was so super, it was super stable that I did not even lose 1% of confidence on it. I was riding however I wanted, however, it was possible to drive and on those road conditions. Right. There was, off-road conditions also, and this bike was super comfortable and stable. So सारे terrains में this is the bike that supported you. Exactly. I tell you, there was a time where it was completely off-road. Okay, जो normal bikes थी वो वहाँ से नहीं जा पा रही थी. And मैंने सोचा कि चल ये I had confidence on this one. So वहाँ से लेके गया, ये smoothly गई है. Right. पूरे रास्ते कहीं इसने कोई दिक्कत नहीं करी, कुछ नहीं किया. So you loved the thing. Huh? I just loved it. Yeah. And coming on to that, I mean, you've ridden the bike for 5,000 kilometers. Yes. कोई ऐसी चीज है जो आपको लगता है कि हाँ this could have been better, और according to you कि हाँ ये होता तो और मजा आता बाइक में? Honestly, मुझे ऐसा नहीं हुआ. Okay. See, first of all, I believe riding this bike, you should be mature enough to ride this Royal Enfield. Yeah. I mean, it shouldn't be driven by just anybody because they won't take care of it while riding. So, I used to go on rides and all. I practiced on it as a mature rider. Right. I just didn't go there straight away कि भाई मुझे जाना solo trip पे मैं चला गया. I practiced on it. I learned how to handle the bike, how to ride maturely. Yeah. And then I went for the solo trip. And all that, I didn't feel कि इसमें ये कमी होनी चाहिए. हाँ, शायद मुझे कम experience हो, ठीक है, driving में, कि मुझे हो कि भाई इसमें ये change आना चाहिए, वो change आना चाहिए. But as of now, as far as I've driven this bike, I didn't feel anything कि इसमें कुछ ऐसा change आना चाहिए, वैसा change आना चाहिए. It's just good. perfect. You Just loved the perfect. experience, Yeah, it's just perfect. And also, I would like to add one thing. इसका जो साउंड नोट है वो भी जो दूसरे क्लासिक्स हैं स्टैंडर्ड्स हैं उससे डिफरेंट है. Right. It has some bassy note in it, which gives you some pump in it कि भाई कुछ चला रहे हो आप heavy चीज. Yes. So compared to the old Royal Enfields, एक जो बहुत अच्छी Royal Enfield ने चीज करी है that they have reproduced the sound accurately. So it is not as the old bikes used to sound, but मॉडर्न एमिशन नॉर्म्स के हिसाब से और आजकल जो नॉइज नॉर्म्स के हिसाब से इट इज़ वेरी वेल ट्यून्ड. राइट. सो अभिनव, आपसे बात करके मेरे को ऐसा लग रहा है कि यू आर लविंग योर एक्सपीरियंस. आपने अब जो ट्रिप करी है और आपने जो ओनरशिप एक्सपीरियंस इज वेरी गुड. एंड डेफिनेटली इन द फ्यूचर जैसे आप बाइक और चलाते हैं, एंड ऑफ कोर्स आई थिंक अभी आपकी सर्विस भी नहीं हुई होगी इस बाइक की. हाँ, अभी 2 सर्विस हुई है. Okay. 3rd is due on August 5th. Okay, so we'll come on to that experience in the future, and we'll definitely we'll be coming back to Abhinav for the future experience. So thank you guys, thank you for watching, thank you Abhinav. Thank you so and, much for calling. This is Akshay from Bikermaniacs. Hey guys, I hope you like this informative video, and you know what to do. Like, share and subscribe. Thanks for watching guys.